Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीजों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले रत्नाप्रिया श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज के अंदर 59th रैंक है जो सिक्योर की है। अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे, जैसे कि अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि जब आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो तो कहीं ये आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनको एक तरीके से कॉमनली उनको पूजा की जाती है, वर्शिप माना जाता है। तो ऐसे लोक देवता कौन है? सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग क्या होती है, इसके बारे में समझाइए। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, या फिर इसके संबंध में कोई फेमस केस लॉ है क्या? सीआरपीसी के अंदर कितने स्केड्यूल्स हैं जो दे रखे हैं पीछे, उनको एक्सप्लेन कीजिए। सीआरपीसी के पहले शेड्यूल में कितने कॉलम्स हैं? हवा महल, एक मध्य प्रदेश में एक हवा महल है, उसके बारे में कुछ जानते हो तो बताइए। या फिर एडमिशन के बारे में जजमेंट अनाउंस कैसे किया जा सकता है? इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 354 और 509, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? लाइक कि अगर एडिशनल चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो क्या पूरी की पूरी प्रोसीजर को वापस रिवाइज किया जाएगा? आपका अभी ये कौन सा अटेम्प्ट है? कैंडिडेट से पूछा गया कि अभी आप जो अटेम्प्ट देने जा रहे हो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? साथ ही साथ इन्होंने जब नेट के बारे में बताया कि इन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो फिर कुछ बातें नेट के संबंध में हुई कि अगर आप नेट पर फोकस नहीं करते और जुडिशरी पर फोकस करते तो कहेंगे आपको नहीं लगता कि कहेंगे आपका जो है जुडिशरी टाइम पे क्लियर हो जाता। फिर सीपीसी के अंदर महिलाओं के संबंध में कौन कौन सी प्रोविजन आपको अभी माइंड में रिकॉल हो पा रहे हैं? क्या सीपीसी में कहीं पर ये बर्दाश्तनी वर्ड लिखा हुआ है क्या? यूडीएचआर, ये जो शॉर्ट संक्षिप्त एब्रीविएशन है किसका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके शॉर्टकट को पूछा गया। फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी दी गई कि ह्यूमन राइट्स कहीं पर डिफाइन हो रखे हैं क्या, उनके बारे में बताइए। क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं पर ह्यूमन राइट के बारे में जिक्र हो रखा है क्या? करंटली यूनाइटेड नेशन यूएनए इंडिया को कौन रिप्रेजेंट है जो कर रहा है? साथ ही साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट की जो कैरेक्टर के क्वेश्चंस थे, जैसे आप एक जज हो, आपके सामने जो है रेप का एक मैटर है जहां पर रेप विक्टिम को सामने वाला एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन कर रहा है कैरेक्टर के सवालों को लेकर, तो क्या आप उनको स्टॉप करने की पावर कर सकते हो? आप उनको रोक सकते हो इस तरह के सवाल पूछने से? जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, वो कहां पर है? एमपीएलआरसी के अंदर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के संबंध में क्या कोई प्रोविजन है क्या? साथ साथ कैंडिडेट से ये पूछा गया कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो तो बताइए। इंडियन एविडेंस एक्ट में वो प्रिजम्पशन कहाँ है जहां ये लिखा हुआ है कि ऑल द जुडिशियल वर्क जो है वो रेगुलरली परफॉर्म होगा। सपोज करो कि एक 10 साल का बच्चा है जिसने गोल्ड चेन है जो पहन के रखी हुई है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है उस बच्चे को उस गोल्ड चेन के लालच में लेके चला जाता है, तो क्या यहाँ पर और वापिस बच्चे को पीछे छोड़ देता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया है क्या, कोई ऑफेंस किया है क्या? कौन सा ऑफेंस होगा यहाँ पर? ये किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये क्या चीज होती है, इसको एक्सप्लेन करो। अगर थेफ्ट का अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो ये ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है?
मध्य प्रदेश में क्या टेम्पररी इंजेक्शन को लेकर कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या हाल ही में कहीं पर? इस तरीके से अप्रोक्सली हाफ एन आवर का इनका मॉक इंटरव्यू चला था और आप लोग इस बात को फील कर पाएंगे किस तरीके से प्रोफेशनल वे में इनके इंटरव्यू को डील किया गया लिंकिंग लॉ इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। ये कैंडिडेट्स अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के अंदर 59th रैंक जो एश्योर की है और कहीं कहीं जो है ये लिंकिंग लॉ की अपने आप में एस्पिरेंट रहे हुए हैं। सो आप लोग भी इनके मॉक इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी मुझे विश्वास है। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please tell us something about yourself. Ma'am, my name is Ratnapriya Shrivastava. I was born in a small town in Motihari and I have been raised in Bhopal, from where I did my schooling. After that, I did my graduation from Chanakya National Law University, Patna, and my master's from National Law School of India, University, Bangalore. Right now, I'm teaching as a guest faculty in Barkatullah University, Bhopal, and I'm also pursuing. Last month, I got enrolled in PhD as well. Oh, great. So why you are involving too many things at a time? Don't you think this will distract your preparation for your judiciary? Ma'am, actually, I did my post-graduation in the year 2019. After that, I indulged myself in preparation of judiciary solely. But due to COVID, there was this uncertainty and also delay in exams. So that was the reason that I enrolled myself for, not enrolled, but that's the reason I got into teaching as a guest faculty only. It's a temporary post because I did not want to lose touch of law. And I did not want to sit idly at home. And this also you could have joined some law firm. I could have, ma'am, but the benefit of guest faculty is that I only give 1 hour there, and then I could get back to studies. This is your plan B, right? Yes, ma'am. I haven't thought of plan B, but it could be my plan B if I continuously couldn't qualify in judiciary. It could be, but it's right now I only have one plan, that is civil judge. You were raised in Indore, right? Bhopal, ma'am. Bhopal. Yes, ma'am. Okay. If I'm not wrong, in Bhopal there is a place where students are taught in a guru ashram type things. Their Shishya Guru system is there. There's one temple. Sorry, ma'am, I'm not aware of it. Not aware of this? No, ma'am. The ashram system, about it. जैसे पहले आश्रम सिस्टम चलता था उस तरह से पढ़ाई किया जाता है भोपाल में एक जगह है. I will surely find out about it, ma'am. Okay, you are appearing in MP Judiciary or Maharashtra Judiciary? MP Judiciary, ma'am. MP Judiciary. Acha, tell me, there are few Lok Devtas which are equally worshipped in Rajasthan and Madhya Pradesh. Lok Devtas. Yes. Sorry, ma'am, I don't know. Okay. Do you have any idea who will be chief guest on this upcoming Republic Day? Yes, ma'am. It's President of Egypt. I think his name is Mr. Abdul Al-Sisi. It's Abdul Abdah. It's not Abdul exactly. It's Abdah Fateh something. Thank you, ma'am. It's okay. So let's come to CPC. What do you know about subsequent pleadings? Subsequent pleadings. I'm unable to recall it right now, ma'am. I will read about it. Okay. Do you know something about exculpatory and inculpatory statements in our Evidence Act? Yes, ma'am. Exculpatory statement means those who relieve a person from a charge of an offense, and inculpatory which act in his against, and it would strengthen the case of prosecution. And it would, in a way, make the charge more better. If a person says few inculpatory statements and states few exculpatory statement, so how will you decide conviction on that? Ma'am, as per the recent judgment of the Honorable Supreme Court, the statement has to be read as a whole. If it is, the inculpatory and the exculpatory cannot be
differentiated and cannot be, the exculpatory cannot be removed and inculpatory cannot be accepted. It should be read as a whole. That is the judgment, ma'am. Any famous case law on this? That's not a recent one. That's an old one. Yes, ma'am. There has been a series of cases. First was Palvinder Kaur case versus State of Punjab. Then there was, so ma'am, there was one case of State of Bihar. I'm not able to recollect the name of the accused. And also, I think Agnu Nagesha case was also connected with this case. I might be Agnu Nagesha. Okay, how many schedules are there in CRPC? Ma'am, 2 schedules. Can you explain? Ma'am, Schedule 1. Ma'am, CRPC. You said Yes, CRPC. Yes, ma'am. CRPC. Yes, ma'am. CRPC Schedule 1, it mentions the offences, whether it is bailable, non-bailable, cognizable or non-cognizable. And Schedule 2, it states numerous forms that are mentioned in CRPC. How many columns are there in Schedule 1? Ma'am, as far as I can count right now, there might be 6 columns. All right. Okay. ये बताइए कि there is one Hawa Mahal in MP also. Do you know anything about that? No, ma'am. Nothing about that. I know only about Jaipur one, not of MP, ma'am. अच्छा ठीक है. ये बताइए कि एडमिशन पे जजमेंट अनाउंस करना. What is this? Ma'am, can I take a moment to think, please? Sure. Ma'am, I might be wrong. Can I take a guess, please? Sure. Ma'am, I think Order 13 states that if an admission has been made by one of the parties, and if it hasn't been contested by the other party, then the court can pass an order based on that admission. Okay, ये बताइए सेक्शन 354 and 509 IPC दोनों में डिफरेंस क्या है? Ma'am, in 354, there is either assault or force to outrage the modesty of women. And in 509, the intention is that something should be seen or some words should be heard by the woman in order to outrage the modesty of her. So while in 354, there is some act. In 509, there are words or something is shown to her. Can a person insult the modesty of a 3-month-old girl? Yes, ma'am. Any case law on this? I don't remember the case law, but I do remember the concept that even as soon as a girl is born, she is considered a woman under IPC. So irrespective of her age, her modesty can be outraged. Okay. Can you name 2 similarities between, in these 2 sections? Yes, ma'am. First would be intention. In this, the intention is to outrage the modesty of women. And ma'am, I'm not able to get the second difference. Okay. Are they not gender neutral? They are both directed towards women. So, ma'am, they are not gender, as in the offender. Offender. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are gender Both are neutral. gender neutral. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. What court would do if there's an omission of charges? Can they add on at a later stage? Yes, ma'am. As per section 216 of CRPC, the court can add or alter charges before the pronouncement of judgment. Anytime.
Yes, ma'am. In England. What will the course? They'll start de novo or they'll start from that stage? Ma'am, firstly, if the court thinks that both the parties can continue and there won't be any abuse of justice, then the court can continue the proceedings. But if the court thinks that the party needs some time, If then there's an additional charge, then in that case, ma'am, the court has the discretion either to start the proceeding for de novo for that charge or to continue with that proceeding. But the court can call additional witnesses or can re-examine the witnesses. don't you think कि अगर एडिशनल चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज फ्रेमिंग के जस्ट बाद से पूरा दोबारा से सब कुछ होगा, क्योंकि बाकी इश्यूज उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं. Yes, ma'am. Hence, I think it's the discretion of the court. If they thinks that a de novo trial is required, then the court can do so. Okay. मीनाक्षी मैम. रत्नाप्रिया, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? I'm second attempt. MP. MP, ma'am. I wrote means in my first attempt, but I didn't get a call for interview. आप LLM भी है आपका? Yes, ma'am. कौन से ब्रांच में? Human rights. Human rights. And आप NET भी है शायद? Yes, ma'am. Net JRF too. NET JRF too. Yes, ma'am. Why you want to become a judge? Ma'am, PhD, you have got qualified as a NET JRF also the judge. ma'am, since a very tender age of 13, I had an inclination towards judiciary. All the things that I qualified later on in age, be it NET JRF or my PhD, it was because of circumstances. Because, for example, in 2019, I qualified my JRF. And then the duration of JRF, it's 3 months, 3 years. So I did not want to join PhD because I wanted to give my heart and soul to judiciary. And it was only in the year 2022, that too in the month of November, when my JRF was about to expire, that I got myself enrolled in PhD because there was this uncertainty. So I always wanted to become a civil judge. Due to COVID and due to delay, I got involved in other things as well. मतलब आपका as such कोई जज बनना ही ड्रीम नहीं है जिस हिसाब से आपकी डिग्रीज हैं, नेट है, आपने एज अ बैकअप जुडिशरी को रखा है. No, ma'am. Sorry, ma'am, but it might give this impression, but it's the other way around. My goal, or I would say my ambition, was always to become a judge. And I won't say backup, but the other things that followed. Because there was some delay in achieving my objective. So that happened. It's तो the other. डिले का रीजन मैं यही मानती हूँ कि आपने सब जगह ही अपना मतलब ये है ना कि आपको नेट भी करना था, वो भी करना था. अगर एक बार में जुडिशरी तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता, मुझे ऐसा लगता है. Ma'am, my net was in year 2019 and my first attempt was in 2021 and I got enrolled in PhD in 2022. So from 2019 till 2022, I was solely focused on judiciary. LLB से पहले आपने क्या किया हुआ है? Before LLB, ma'am, BA, BSc, BCom क्या था? mine was a 5-year integrated course, BBA LLB, ma'am. ओके. कि आप मेरे को ये बताइए कि सीपीसी में विमेन से रिलेटेड कौन-कौन से प्रोविजंस? Ma'am, first would be section 56. In this, it is written that a woman cannot be arrested in execution of a money decree. Then, ma'am, next would be section 132. In this, it is written that a Pardanashi woman would not be compelled to appear in the court. वहाँ पे वर्ड पर्दानशी यूज्ड करा हुआ है 136 में. कहीं पे भी सीपीसी में पर्दानशी औरत. No, I will surely read about it. I think I'm getting confused. I will read about it, ma'am.
Um, और इसके अलावा yes, ma'am. I can recall only these two right now. आपका LLM है ह्यूमन राइट्स में? Yes, ma'am. ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10th December, ma'am. क्यों? Because on this day, 10th December 1948, Universal Declaration of Human Rights, it was adopted. UDHR क्या है? Ma'am, it's a Universal Declaration of Human Rights. It is a official document. It is not binding on nations, but it states the human rights that around 151 sorry, I'm not able to recollect the exact number. That many of the countries. 157. Yes, thank you, ma'am. Around 157 countries, it have adopted it. It ensures the human rights of each and every person on this globe. अच्छा, कौन-कौन से ग्रुप्स बताता है ह्यूमन राइट? कितने ग्रुप्स हैं ह्यूमन राइट्स के? Yes, ma'am. So, ma'am, basically there are 3 generations of human rights, and 4th has been recently added. First, ma'am, 4th generation rights are these new upcoming rights, such as right to technology, right to reproductive rights. These are the 4th generation rights. But थर्ड जनरेशन किस-किस के बारे में बात करता है? yes, ma'am. Ma'am, 3rd generation rights are basically collective rights. Right to self-determination would be one example. And then the traditional, there are 1st generation rights and 2nd generation rights as well. पीस, इंटरनेट, ये किसमें कलेक्टिव में ही आएंगे? थर्ड जनरेशन? Ma'am, right to peace would come under 1st generation right, and right to internet, I think it should be included in 4th generation, which is the new upcoming right. Ma'am, also if I may add, Sustainable development. Yes, ma'am. This would be under 3rd generation, right? Third generation, right? Yes, ma'am. Okay. NHRC, इसके chairperson अभी कौन है? Ma'am, Honorable Justice Arun Mishra. और MP Human Right Commission के? Sorry, ma'am, I'm not aware of it. I will surely read upon it. Okay. कौन सा एक्ट चलता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड? There is Protection of Human Rights Act 1993. 1983. Okay, what do you understand by human rights? जो 2D में define किया है, वो वाली definition. Yes, ma'am. Ma'am, 2D states that human right means all the rights that are necessary for life and personal liberty, and that has been guaranteed under various conventions, international conventions, such as ICCPR and ICESR. क्या ह्यूमन राइट और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ये क्या अलग-अलग राइट्स है क्या? Yes, ma'am. Human rights means those rights that are guaranteed to each individual because he or she is a human being. And humanitarian rights, these are rights that are applicable in times of war. Times of war. Yes, ma'am. अच्छा, वॉर में क्या डिक्लेरेशन होना जरूरी है क्या? किसी भी वॉर में फॉर्मल डिक्लेरेशन? In order to exercise humanitarian law, ma'am, humanitarian rights? No, ma'am. I think if I may guess, I don't think that there should be a formal declaration because we can see that there have been humanitarian rights crises in many places where there have been internal conflict as well. There wasn't any official declaration, but these are issues of humanitarian right crisis. आप मेरे को ये बताइए कि विमेन पे कौन सा डिक्लेरेशन है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है? Ma'am, there is a Convention for Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW. India is a signatory to it. तो इससे कोई एक्ट इंडिया में आया हो? Yes, ma'am. According to this, the Honorable Supreme Court gave the Vishaka guidelines, and after that, Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act was enforced in the year 2013. क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इससे नहीं है?
I'm not sure, ma'am. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं पढ़ा? No, ma'am. It's not. It's बट not. ये आपकी सिलेबस में नहीं है, बट ये आप पढ़ के ही जाना एक बार, है ना, क्योंकि Yes, आप ma'am. एलएलएम से हैं उसमें। अच्छा, यूएन में अभी इंडिया की ओर से कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं यूएन इंडिया? कौन से जस्टिस? Not aware of it, ma'am. ओके, अब मेरे को ये बताइए, क्या अभी के सिनेरियो में मैं ये बोल सकती हूँ सारे ह्यूमन राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स है? Ma'am, there are officially, if we see right from Article 13 to 32, not all rights that are human rights are guaranteed under Constitution, but the Supreme Court has made an extraordinary effort in including all those rights under the ambit of Article 21. If I may explain, ma'am, as per Article 16 of UDHR, there is a right to marry a person of one's own choice, which wasn't there in the original constitution. But the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, has included this right as well under the ambit of Article 21. ओके, आप मेरे को ये बताओ कि कोई हॉबी आप परस्यू करते हैं? Ma'am, during my leisure time, I'd like to indulge myself in origami and solving jigsaw puzzles. ओके, अरुण सर। Yes, sir. रत्नप्रिया, आपके घर के पास में एक दूध की डेयरी Yes, है, sir. ठीक है? वहां पे घी मिलता है। Ghee, sir. Okay. हाँ, अब वो दुकानदार उस घी को बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो नकली घी बनाने Yes, के लिए आते हैं, ठीक है? वो बना रहा है, तो आईपीसी की किस धारा का अपराध कर रहा है? Sir, this would be adulteration, sale of consumable goods by adulteration. I'm not able to recall the section. अच्छा, ये बताइए कि आप अपने कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट के अभिलेख को बुला सकते हैं, रिकॉर्ड्स को बुला सकते हैं? Sorry, sir, I'm not aware of it. अच्छा, सीपीसी में कहाँ लिखा है कि अगर आप परिसीमा लिमिटेशन का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने वाद पत्र में, या जो अपनी प्लीडिंग्स वगैरह रहती है It needs to be mentioned. अपने वाद पत्र में लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप परिसीमा लिमिटेशन का लाभ ले रहे हो तो। So may I ask that this benefit would be for defendant who is trying to plaintiff. Sorry, sir, I don't know. आप एज ए जज है, आपके सामने किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ था और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है? और जो वकील साहब है वो उसके चरित्र के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। आपको साक्ष्य विधि का जो प्रावधान है, जो आपको पावर देता है उनको रोकने का, वो किस धारा में है? सर, सेक्शन 155, सर सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन, sir, I will read upon it. अच्छा, मुझे बताइए, आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, कुलपति का नाम क्या है? प्रोफेसर एसके जैन। एसके जैन। एमपी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ पर है? रेवेन्यू बोर्ड। सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, जो बाधा हटाना बोलते हैं हम एमपीएलआरसी में, वो क्या कौन करता है वो कार्रवाई? कलेक्टर करता है कि तहसीलदार करता है? सॉरी सर, यस सर, तहसीलदार। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? सर, ट्राई टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स, बट आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आप मुझे बताइए कि साक्ष्य विधि में एक प्रिजम्पशंस है कि जितने भी जुडिशियली वर्क होंगे वो रेगुलरली परफॉर्म्ड हो रहे हैं। Yes, sir. इस सेक्शन में, इस सेक्शन में So, under Indian Evidence Act. हम्म Sorry, sir, I'm not able to recall. एक बच्चा है, एक बच्चा है Yes, sir. 10 साल का, ठीक है, उसने सोने की चेन Yes, पहन sir. रखी है। एक व्यक्ति आता है और देखता है कि अरे सोने की चेन इस बच्चे ने पहन रखी है, उस बच्चे Yes, को sir. उठा ले जाता है और सोने की चेन निकाल लेता है, उसके बाद फिर वापस छोड़ देता है। इस धारा का अपराध हुआ ये। So, first of all, it would be kidnapping. And also section 368. 369 369, sir. Under the age of 10, yes, sir. 369. और किडनैपिंग फॉर रेंसम, ये क्या होता है? So, under section 364, 364A, I think, or 364, sorry, sir, I'm getting confused. In this, if a person abducts or kidnaps another person and demands money in order to release the person, this is known as kidnapping for ransom. अच्छा, एक बताइए, आपके घर के बाहर एक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, Yes. वो जाके उस पर पोजीशन ले लेता है अनलॉफुल तरीके से, तो एमपीएलआरसी पे जो प्रोविजन है वो मुझे बताना कि उसको डिस्पोजेस किया जा सकता है। Sir, I need to study MPLRs. I haven't studied local laws properly. आप तो मध्य प्रदेश से, आपको लोकल लॉ तो पढ़ना चाहिए था। Yes, sir. जो चोरी है उसका नेचर क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? So if I'm allowed to guess, I think it's a bailable offense. बेलेबल है? Yes, sir. श्योर है आप? श्योर है? No, sir, I'm taking a guess here. गेस कर रहे हैं आप। अच्छा, एक व्यक्ति को रीट निकल चुकी है कि उसको छोड़ दिया जाए, Yes, sir. उसके बाद भी उसका परिरोध मतलब रामकुल कन्फाइनमेंट किया हुआ है उसका, तो Yes, sir. आईपीसी का कहीं अपराध है? Yes, sir. So I'm not able to get the exact section, but wrongful confinement. It's in line of 340s. I'm sorry, I'm not able to get the exact section. अच्छा, एमपी में कई स्पेशल अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या टेम्पररी इंजंक्शंस के ऊपर, कि जहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाएगा? So I don't know about the special amendment of MP, but there is one provision in SRA that's not for temporary injunction, but that's for permanent. That I know. मतलब The latest amendment. एमपी के स्पेशल अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े आपने? No, sir. I will. कितने लूट जो है एमपी में ट्रायल बाय सेशन है या ट्रायल बाय जेएमएफसी है? रॉबरी। I will read, sir. ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, परिवाद वापस लेना, कंप्लेंट वापस लेना, है ना, और चार्ज वापस लेना और प्रोसिक्यूशन वापस लेना, इन तीनों में क्या अंतर है? Yes, sir. So withdrawal of complaint would be by the complainant, while withdrawal of prosecution, it would be by the prosecution on the permission or say the sanction by the government of state government or the central government, as the case may be. And withdrawal of charge. So I'm not able to know the exact section for. ठीक है, I चलिए, know ठीक the है। basic difference between withdrawal of complaint and prosecution, but I'm not able to get the section for withdrawal of charge. चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Anji Ratnapriya ji, are you satisfied with your interview? Ma'am, I need to focus on the practical aspect. I need to learn the sections of mainly of IPC and CRPC also.
So I think not this so problem much. is because in NLUs, you were from NLU, no? Yes, ma'am. You are supposed to write exam with open books. Ma'am, You in are not in- NLS, Yeah. in NLS, You are not in habit. Even in Kolkata WBNUJS, they give paper with open books. So you people are not aware with the provisions, exact section number. I think this is a problem, yes, ma'am. right? So, but while appearing in judiciary, you won't be provided books everywhere. See, Yes, and ma'am. especially in this interview. So you need to go through sections. And if you can't go through the whole section, at least go to the index. Index can help you a lot. Okay? Shortcut is this at this moment. Yes, Go ma'am. through index regularly. You will come across the sections every day and you will by heart it. Another thing, when he asked you questions, the one thing I wanted to point out at that very moment, कि जब तुम्हें नहीं आ रहा question, don't move your eyeballs. Okay. So give a straight look. Okay. Yes, That ma'am. would be better. Okay. Thirdly, you are appearing an MP judiciary exam. Yes, ma'am. You need to go through local laws. I will. Yes. 3 feedbacks are enough. Otherwise, you are confident, you are polite, all is well. Thank you, ma'am. रत्नप्रिया, मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट में आपकी बहुत अच्छी कमांड है. कुछ लॉ के प्रोविजन जैसे आपको खुद को ही रियलाइज हो गया, जैसे आईपीसी आपका बहुत वीक है, एमपी के लोकल लॉज और एमपी के जो भी सर ने आपसे पूछे जीके से रिलेटेड, क्योंकि जीके का पार्ट इसमें है, उस पर ध्यान दो. ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, है ना. आप उसको मेंटेन रखिए और जैसे आईज आप इधर उधर करते हैं तो वो मैम की इस बात को जरूर आप ध्यान रखना. ठीक है, और परफेक्ट है. मैम थोड़ा सा बस एक थोड़ा सा बोल देंगे Yes, sir. को. आप एमपी के स्पेशल अमेंडमेंट जैसे सीपीसी में हुआ है, सीआरपीसी में हुआ है, आईपीसी में हुआ है, उनको सबको अच्छे से पढ़ के जाना है. स्पेशल अमेंडमेंट जो हुए हैं अपने यहाँ पे. Sir, can I note it down, please? Just वो बहुत सारी लिस्ट है, वो बहुत लिस्ट है. आपको उसको ये वीडियो CPC मिल जब आप- जाएगा, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा. Yes, sir. और भोपाल के डीजे साहब का नाम जरूर याद करके जाना है ना. Yes, sir. पता है अभी? No, sir. नहीं पता. चलो ठीक है, ठीक है. एक Best चीज of luck. मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने जो नेट किया है, पीएचडी अभी आप कर रहे हैं, तो उस पे आप प्रिपेयर रहना कि आप फिर इतना सब होने के बाद आप टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकती हैं. व्हाई शुड यू वांट टू बिकम अ जज? तो इस पे आपके पास एक रियल रीजन होना चाहिए, है ना. मैं आपके उस आंसर से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी क्योंकि सो मेनी पेपर्स, है ना. मैम एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था ताकि क्योंकि बहुत लंबा गैप हो ही गया था इतने साल. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कोर्ट क्यों नहीं गए? जैसे मैम ने आपसे पूछा लॉ फर्म क्यों नहीं ज्वाइन किया, वो आप उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर करना कि ये रीजन मैंने ये नहीं लेकर ये क्यों चूज करा. तो उस पर आपके पास रीजनिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. यस मैम. तो मैम एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए ड्रॉबैक ही हो गया है कि मैं कहीं इन्वॉल्व हो गई थी. No, Ratnapriya, it's not so. Please, it's not so. वो ये भी कह सकते हैं कि we are lucky to have a well qualified judge. Please take it positively. But you need to prove this that you will be a well qualified judge for this. Yes, ma'am. Okay? इसको नेगेटिव वे में जाने दो ही मत ना, इसको अच्छे से कर लो, रेडी कर लो बस इसको. अदरवाइज तो आप सेलेक्टेड मतलब सेलेक्ट होने वाली कैंडिडेट. You are one step ahead others. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Good luck. Thank you so much.
Unacademy. Let's crack it.